to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I'm going to start a new unit, that is natural resources. So let's begin with that. No new entry will be allowed now. So we have to start a new unit that is about natural resources. एक हम इसकी क्लासिफिकेशन भी खोल लेते हैं क्रोम पे. अपनी क्लास पे ध्यान दे ले. Yes. Now this is visible. Is it visible to you? No. Yes, ma'am. Okay. Now I want to define first of all, what do you mean by resource? A resource is anything which is present on earth in reserve, which is present in nature in reserve and is useful to mankind. So that is known as natural resource. The valuable things which are present on the earth's surface and are useful to the mankind, that are known as natural resources. Now we can classify the natural resources into two: inexhaustible and exhaustible. What do you mean by exhaustible natural resource? The resources which सबसे पहले inexhaustible करते हैं. Inexhaustible को हम क्या कहेंगे? The resources which are unlimited in supply and perpetual in nature. Perpetual का मतलब जो निरंतर बने हुए हैं, continuous है on the earth. So the resources which are unlimited in supply and perpetual in nature, and they will never be exhaust even if you will use them indiscriminately. Such type of resources are termed as inexhaustible resources. So ऐसे resources जो कि आपका अनलिमिटेड है और परपेचुअल है और जिनको आप इनडिस्क्रिमिनेटली, का मतलब क्या होता है, बिना सोचे समझे भी अगर आप उनको यूज करोगे तो भी वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि निरंतर धरती पर बने हुए हैं. तो ऐसे रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे सोलर, विंड, thermal, tidal, all these resources are perpetual in nature. So these resources are inexhaustible. Now what do you mean by exhaustible natural resource? The resources which are limited in supply and they are not perpetual. They, once you will use them, they can last forever, and such type of resources will be exhaust if they are used indiscriminately. अगर आप इन्हें बिना सोचे समझे अगर आप इनको यूटिलाइज करोगे तो ये रिसोर्सेज जो हैं एक दिन खत्म हो जाएंगे. ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिबल. नाउ एग्जॉस्टिबल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. Now renewable resources are those which can be renewed after a short span of time. जिनको आप थोड़े समय के अंतराल के बाद रिन्यू कर सके, रिसाइकल कर सके. ऐसे रिसोर्सेज को आप क्या कहेंगे? रिन्यूएबल. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी रिन्यूड वंस यू फॉरएवर. एक बार आपने इस्तेमाल किए वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं. ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. So both are exhaustible, but one is renewed, another one cannot be renewed. But because in the renewable resources the renewal period is short, whereas in non-renewable resources the renewable period may be extend up to thousands and lakhs of years. So we can say that this is exhaustible and also non-renewable resources. Now what is the example of renewable exhaustible? Like water. Water, you can say the groundwater can deplete, the surface water can deplete. If you will use the groundwater, extract the groundwater in large amount, the groundwater table can dry up. But after a good rainfall, the surface water and groundwater will again recharge. So this is exhaustible but renewable. Same, the soil fertility, it is exhaustible. If the farmers will obtain the same type of crop from the field, then the time will come that the fertility of that soil will
get exhaust. But after adding some manure and fertilizer, the fertility of the soil can be again re-achieved. So अच्छा मैंने such अंडरलाइन type किया of तो लाइक resource is exhaustible, but you can renew them after a short span of time. So these are termed as renewable and तेरा भी बोर्ड है also अगले साल exhaustible. नॉन रिन्यूएबल में चुन्नू आपका में एग्जांपल साली क्या है? जैसे बायोलॉजिकल स्पीसीज, once the species get extinct, that will never come again on the surface of earth, like dodo bird जब and बोर्ड बढ़ेगी dinosaurs. तो सब Once they are बच extinct, you will never see again. सेम आपका मिनरल्स में आता है कोल, पेट्रोल, डीजल. once you have used them, it will be lost forever. So these resources are non renewable and also exhaustible, because you cannot renew them, and also their renewal period may extend up to thousands lakhs of years. So this is the classification of natural resources. Natural resources can be classified into two: exhaustible and inexhaustible, and exhaustible are further classified into two: renewable and non renewable. Now we come to again our notes, what we have to do. So we have to discuss, we have discussed about the definition of दिखा natural रही है ना बोल्ड से resources, देख the के classification of natural resources. These definitions are written here. Now we come to the types of natural resources. आपका इस यूनिट में 6 different types of natural resources we will study. 6 तरह के natural resources हम पढ़ेंगे, जैसे forest resource हो गया, water resource हो गया, mineral resource हो गया, food resource, energy and land. तो ये 6 रिसोर्सेज आपके सिलेबस में दिए हुए हैं. अगर आप अलग से देखोगे तो आपको 4 ही दिखेंगे, लेकिन उसमें फॉरेस्ट और वाटर एक में ही दिया हुआ है, और फूड और आई थिंक मिनरल एक में दिया हुआ है. तो इस तरह से एनर्जी और लैंड अलग अलग दिया हुआ है. तो इस तरह से सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो 4 रिसोर्सेज दिए हुए हैं, बट वी हैव टू डू 6 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. वन बाय वन, एक एक लेक्चर में हम ये कंप्लीट करेंगे. So first I am going to start the forest resource. So what do you mean by the forest resource, or how can you recognize the forest, and how will you define the forest? Forest को आप कैसे define करेंगे? Now it is a community which is predominantly made up of tall trees and woody plants. Forest क्या होते हैं? अगर मैं कहूँ कि forest वो है जिसमें wild flora and fauna है, that will be not the right answer, because आपका वाइल्ड फ्लोरा फौना तो आपका ग्रासलैंड में भी होता है, डेजर्ट में भी होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी होता है. तो फिर आप फॉरेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे? फॉरेस्ट एक्चुअली आइडेंटिफाई होते हैं टॉल ट्रीज से एंड वुडी प्लांट्स. The forest, it is a community which is predominantly made up of tall trees and woody plants, and you know that forests are classified into various types according to the sunlight temperature, according to the latitude and altitude. You can divide the forest into various types, like there are tropical forests, there are temperate forests, and tropical are further of three types, but this is the type according to the location, geographical location. Now forest, they may be of other types also, that we will discuss later. But before discussing that, I want to tell you the importance of forest or the function of forest. You already know that forest plays various functions, but these functions you may divide into 3 main headings. आप 3 main headings के अंडर ये function divide कर सकते हैं. One is productive function, another one is protective function, and third one अब भी रोक रही हैं आधे बच्चों को. हाँ बाकी लीव कर दीजिए, बाकी बच्चों को function. नहीं क्या समझ? इतनी जल्दी डाउनलोड करके देख ली, पढ़ा लड़ा नहीं डाउनलोड मैम गई क्या? मैम ये ऐसा है जैसे ये मैम भी गई. मैम ही चली गई. अब मैंने तो कल भी कपड़े धोए थे, आज भी धो रही है क्या? मैंने कल भी तो कपड़े धोए थे. हाँ आज भी धो रही है. मैम गई चक्षु. मैं सोच रही हूँ इतना लेम जोक था. अरे उसको छोड़, मैं सोच रही हूँ मैथ्स पढ़ती हूँ, ठीक है,
केमिस्ट्री तो लगभग वही है जो इसमें आएगी जेई में, तो हमारा वाली वैसे भी उनका कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। पर दीदी से यार कितना लेम जोक भेजती है देखना तो ये चल मेरे को बकवास मत कर, मैम।